वेलकम बैक टू चेसिंग द टारगेट। देखो बारिश हो रही थी बट लाइक बॉलों की बारिश, छक्कों की बारिश हो रही थी। जॉनी बेयर छक्कों स्टॉर्म, की बारिश। छक्कों की लिटरली मतलब Stark, Hazelwood, Cummins, everybody got smashed all over the ground. Too much batting थे यार, 99 runs बेचारा. I felt so bad for him that he wasn't able to get a century. But in Australia looked dismantled, disoriented, क्या बोलना, like they just haven't come to the party at all at Manchester, and it's been too bad, bro. Like I don't know, man, क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया को, थक गया. I think fatigue लग गया, जंग लग गया. I don't know कैसा है. There's no, I mean, it is a flatter pitch. I expected much better batting. I think I messaged you immediately when Australia started to batting, saying कि भाई they just need to bat. And जितना डॉक्यूमेंट्रियों में लिखता स्टीव स्मिथ, लाबुशिन के we love batting. This is like a perfect paradise for them to bat. लवशिन तो खेल रहा Labushin विदाउट खेल रहा, but he'll get 50, he'll get out, bro. Then he'll start like whining and he'll go back home. So I don't know, man. मेरे this is it when you have two quality teams, two big teams with two different kind of ideas, two different kind of tactics. You win some, you lose some. Australia won the first two, England won the third one. Now the fourth one, they're in a commanding position. अगर बारिश नहीं हुई तो फिर England will probably win this game. Yeah. And you have to give England credit there. Yeah, Australia थोड़ा सा fatigue दिख रहे थे, and they look a bit clueless against Mark Wood. They look clueless against Vokes, and that is affecting their bowling as well, because they don't have what do you call it? They don't have that confidence in terms of they don't have enough runs on the board, and then their bowlers are getting dismantled. Basball is Yeah, man. alive. Who said you can't play against Australia? Basball, Basball, Australia, Australia किधर रखते हैं Basball को फैस? वो आशीष से पूछना पड़ेगा वो कहाँ रखते हैं, because उसको कहीं अच्छा भी आइडिया है. नहीं रख सकते ये तो. लाइक उन लोग, that's the thing, like the two high quality teams, and you're going to have advantages, disadvantages. But the way England played today, Johnny Bair-Storm outstanding, man. क्या मार रहा था यार उन्हें. And With Harry Brook, Ben ease, bro, Stokes with also. ease. Like it will not even. Sorry, I'm just uploading something, but Yeah. it's upsetting to see the class. Like not upsetting to see. It's also entertaining to see, very It's frankly. But very entertaining to it's see. entertaining. But Pat Cummins, man, I just feel so bad for him. He's so close to But winning the that's how good these massive. guys are, right? पैट कमिंस Yeah. आप ही देखो कब से देख रहे हो उसको, उन्हें हाई क्वालिटी बॉलर है. अब उन लोग जैसा खींच रहे थे, लाइक बेयरस्टो, स्टोक्स, ब्रुक, it just shows high quality that England have. That partnership between Stokes and Harry Brook, that was very important also. It laid the platform for Bairstow ने आके फिर जो ले बशीर दे बशीर जो मारा भाई, खतरनाक. And Bashir, the partnerships Bashir fest with Sassu. the tailenders, brilliant Yeah, partnerships, huh? yeah, With yeah. Broad, I think Anderson. Jimmy Anderson in particular, man. Like I don't know, एक wicket पे उन्हें, he was 50 when Jimmy Anderson came, bro. He was Yeah. 50 runs when Jimmy Anderson came, and he scored like what 49 runs. Incredible batting arrow. Uh, but Australia, I think 4 wickets down, 162 runs to go. It looks very hard. I think innings defeat is a possibility. Mark Wood cleaning up. I thought Usman Khwaja might be one who would like batting again on the surface, right? Given the record that he's had throughout the tournament, but it's just upsetting to see. And then David Warner again, अच्छा start मिला, फिर 28, 29 पे जाके bold हो गया, inside edge, typical Warner kind of wicket. Yeah, I mean, for me, it's not upsetting. I want this result. I want England to Yeah, I win, mean, make it 2-2. yeah. But थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है pitch. I think Australia missed out in the first innings. जैसा आप बोल रहे थे, right? They threw away their wickets when they all got into starts. Now it's going to get a bit tougher to bat on for sure. We saw in England's innings as well. Ball नीचे रह रहा था, and now Australia innings में भी होने वाला है. Mark Wood, man, that ball he bowled to Travis Head. Oh, Wow, man, incredible. That's an absolute jaffa, man. He freaking smashed his knuckles over there. And now Chirag Bhai interest. is also joined us. Oh, finally, long We time, haven't yes seen him for a sir. long time. He's not following Asia. He's not following Ashes. He's following emerging Asia. Bro, Ashes Yeah, is where it's at, that's man. also sad because India Pakistan are in the final of that. I know no one, like, we actually don't care about it because Ashes is what we're talking about right now. Bro, But Ashes is amazing, they man. won by 60 runs, Pakistan and India. Though 211 pe, it looked like Bangladesh might win. 70 runs ka stand tha from the first two openers, but somehow they managed to get wicket. I think was who 5 wickets kon ki liya tha, Nishant or someone, I think. 5 wicket haul and then 3 wicket from Manav. So it was a good Indian comeback. India Pakistan final, I think, will happen on Sunday because they beat Sri Lanka and India beat Bangladesh. But back to the Ashes. I mean, now from the I'm already going to the fifth test. Do you think मगर Australia अभी needs to get बारिश का क्या सीन है, पहले ये बताओ. बारिश का रहा भी तो so I think 2 days है, you will have some sort of play in it, and you have 6 wickets to take and like 20 run. I'm predicting like a very low lead maybe from Australia, maybe max 25-30 runs lead. That's all. अगर बारिश 2 दिन it doesn't place first because there's a lot of rain coming. If it Yeah. doesn't wash out 2 days, then
Yeah, England should win this, bro. Like England will But be confident. now the question that I have for you is, let's go to the fifth test already, right? I mean, would you think Australia need Lance Morris kind of a bowler for the fifth test? A Maybe fast, freshen it up a bit, get maybe someone like that. But then again, right, Mark Wood, Lance Morris is a big difference. Mark Wood is a very experienced bowler. He's been bowling since 2014, 15. Lance Morris is much more raw, right? It's I yeah, understand where you're coming from in terms of fast bowling, but he's more raw. Will they take that gamble? Will they sit out one of their premium bowlers? I don't know if they'll take that risk. Yeah, you could. He's an option. Uh, yeah, but yeah, like for England, it's working. Like Mark Wood and Vokes both have just completely changed this Ashes. They've flipped it, bro. Like this is Mark Wood's Ashes. Like right now, if they win this test 2-2, he will be like properly be remembered. And जो bowling कर रहा भाई उन्हें incredible. आप देख लो फर्क. He's fresh also. He missed yeah. the first two tests. And the He's killing brilliant thing it, is bro. like he's not like like whatever you want to say. I mean, hopefully not, but there's no signs of injury, no signs of fatigue with him. He's Yeah, so 90 on the far, yeah. trot, bro. On the trot, 90. That's hard, man. Like we can't bowl our own. Like we're like 120, 115 at max, and like I think we उन्हें won't be doing anything. ओवल का टेस्ट अगर खेले उसके बाद he'll take a 3 month break until the World Cup नहीं खेलेगा उन्हें because And it's he very has hard to to play the maintain. World Cup the way England is, man. I think they need him in that World Cup squad. क्या But Vokes bowler as है यार. well and everybody else has contributed immensely. The बेयरस्टो की बात करेंगे यार बिल्कुल वो बाय बेयरस्टो जो करा मैं आज I can't imagine because he was like going slow when Brook was there. Then I think Brook ke baad he still continued to play a slower innings. He was trying to rotate the strike, and then Stuart Broad came. Once everyone got out, he's like, screw this, like this is not me. I thought he would have something going with Brooks, and then he just totally smashed Mitchell Stark for a six, then Cummins for 2 sixes, then Hazelwood for 2 sixes, and all on that same mid-wicket region, man. It was like a beautiful, powerful shot. 99 runs यार अब बेचारा एक रन से चूक गया LBW रिव्यू करने गए ट्राई करे but it didn't work out and he these knew it that's was coming. 99 is what the difference bro 275 की lead आप अगर इसके 99 निकाल दो there's still 100 and something thing and Australia probably would have been a better headspace today. Yeah, 100%. Man. That guy is a wildebeest, bro. He's Ron Weasley on steroids. The way he smashed it today, incredible. Again, we have to give credit to Ben Stokes for backing him because a lot of us, even the Yeah. pundits and Yeah, stuff, were yeah, saying, yeah. "Folks ko leke aao, team mein folks ko leke aao." They kept him not only as a batter, they kept him as a keeper. He's coming after a long injury, bro. एक साल से फैज उन्हें खेल रहा नहीं cricket, and so the innings that he showed today, this is why the team management is backing him. In hindsight, it's easy to clarify things, but yeah, this is why Ben Stokes has stuck with this guy and man, absolutely smashed it, bro. He pummeled the attack, फोड़ के रख दिया उन्हें ऑस्ट्रेलिया को. First it was Zach Crawley and then पहले बड़ा भाई मारता फिर छोटा भाई मारता ऐसा सीन था. Like यहाँ पे उल्टा Yeah. हो गया था, but they smashed it, man, out of the park. और जो power है उसमें incredible है. His mindset is also very focused. The way he batted with the tail, I was very impressed. Again, Yeah. they ran the byes very quickly to the keeper too. Very good match awareness there from Johnny Bairstow. He was specifically telling the umpire कि भाई मैं जा रहा हूँ crease के बाहर also in between. Like I noticed that quite a few times today. Not in a sarcastic way, but he was genuinely didn't want to get out like that again. I mean, I don't think he's ever gonna forget that dismissal, right? Yeah, no, I do, and I think like even if it's not He's like very he's not doing it in a cautious, yeah. sarcastic way, he has to be. For him, he's probably like, I don't want to get out like that again, so I'm going to make sure Yeah. that I'm in my crease, and then I'll think. And what a player he is, and like I think it the was- drama that has been in his life, bro. Like he freaking headbutted David Warner like back in Sydney in a pub, or in England, I think, in a pub, and then he got injured, and then now he's come back, and yeah, he's and I think absolutely killing everybody it. was getting on his case as well. जब से रन आउट हुआ पूरे सता रहे थे उसको कि कौन बेवकूफ ऐसा निकल के जाता है and this 99 actually is sort of a response and it sort of helps to have a confident front because as a wicket keeper he's not the best right now. He's looking very rusty. He's dropping a lot of catches. There But was he's still already taking. Like negativity. I think he's I mean, he's improving taking, game but by when you game. added to that run out, that it just as a player, as a human being, it hits you, right? अरे मेरा run out हो गया, फिर मेरा No, catch drop हो रहा, ये मैच में innings नहीं कीपिंग जा रहा. बेटर करा, बहुत बेटर करा. लाइक जो कैच लिया था फर्स्ट इनिंग में जबरदस्त था. Yeah, that was a अभी very good सेकंड bench इनिंग्स and yeah. में he's taken a few catches too. Yeah, he fumbled again. I think a few overs back over there, but that will happen. Like he is rusty too, and he's like folks is a better keeper. लेकिन अंशुल भाई पूछ रहे जिमी का. आई थिंक जिमी का कुछ नहीं करना है. वहां वुड भाई बोल दिए सबका ठेका लेके बैठ गया. हमें 3 विकेट ले लिया ऑलरेडी एंड वोक्स भी आई थिंक 1 विकेट ले लिया था. तो आई थिंक जिमी एंडरसन कैन जस्ट चिल राइट नाउ एंड मे बी जस्ट एंजॉय possibly fifth test के बाद
just taking the मगर Ashes फैज आप home देखो and being alive. 11 ओवर 17 रन 1.54 इकोनॉमी जिमी इज डूइंग हिज जॉब वहां से दूसरे उन लोग विकेट्स ले रहे हैं इन्हें ही इज होल्डिंग एंड अप ऐसा नहीं है कि इज गेटिंग हिट 8 रन्स इन ओवर एंड saying दिखा दो कहीं उसको रन्स लीक नहीं कर रहा, उन्हें कोई ये अटैक भी नहीं कर रहा उसको, so I think yeah, he's just he going has the quite best about his economy business. right now. He has the best economy. He's holding it tight, and he's frustrating the batsmen. And then they're trying to take risks, on in different against different bowlers, and they're getting out. So I think he's doing a job in this Test match. Here, Test match, but particularly, I don't think Jimmy Anderson has done anything wrong apart from not taking wickets up. That तो like किस्मत की बात है, लेकिन he's doing a good. He's bowling well. I don't think he's bowling that bad. Man, you can't be bowling bad and being going under 2 runs and over. Like his economy is what, Yeah, bro? 1 point something. That is 1.5. incredible economy rate. I mean, it's just like, जो उम्मीद रहती ना जिमी एंडरसन, आई थिंक वही हिसाब से अपन मगर उसको अब देखो उन्हें तराशेंगे. 40 साल का भी है उसके ऊपर भी मगर उन्हें ही इज डूइंग अ जॉब दैट्स व्हाट द थिंग Yeah. इज एंड दैट्स व्हाट स्टोक्स नीड्स फ्रॉम हिम वोक्स एंड वुड आर द ones who they're relying on to take the wickets and Broad also to chip in and that's exactly what's happening the game plan is working so far so I don't think it's Yeah, I that mean, negative. as long as he's not expensive, he's not a burden, a liability on the team. It makes I sense don't to think have him in the so team. far he And isn't this series this might be yeah, his I last think series or last Ashes but he's not a yeah, liability but I right now. just think जिस तरीके से जॉश टंग का impact था in terms of space and stuff, yeah, he's got 40 and stuff. Maybe that's where, yeah, that's exactly what Anshul bhai is saying. कि भाई impact wise maybe अगर जॉश और एंडरसन को तराश, I mean, obviously there's immense experience. अपन जिमी को कुछ बोल भी नहीं सकते, but वो हिसाब से बोल रहे. But I think it doesn't make difference. Home But if ground you है take उसका. this match into context if you take this Yeah, match into what they context he's require doing a from him, job. yeah, what they Yeah. require from him exactly वही deliver कर रहा है. Just wicket to wicket डालो and just runs मत दो, and that's exactly what he's doing. Obviously हाँ. उतना तो experience है उसको कि वो runs leak करेगा भी नहीं. So yeah, I think next test will be important. Jimmy का selection होगा या नहीं होगा. I mean, in context to this, but again, to win an Ashes, you want all of your bowlers to fire probably in a wicket taking sense. That's not Uh, always gonna happen. it's not always going to happen, but they Yeah, obviously that's not try always. different things, try different people, because you might not feel that threatened from a Jimmy Anderson at this point, right? Like if you have someone like maybe a Tongue who got 2 wickets, I don't know, I See, just maybe psychological. the problem is if Wood is not there, Wokes is not there, and Anderson leading the attack with Broad, then you have a problem Then right you now have a because he's problem. not peak Yeah. Anderson. He's not picking up wickets. He's not pace थोड़ा कम हो गया वो सब है. लेकिन if you have these two other bowlers there with him, then he's doing a job. In the But fifth test, you still don't have to pick him in the fifth test. You can go with Josh Tongue, but I'm just saying if you're going yeah. with this bowling attack, it's not the worst thing in the world. But also on the flip side, अगर आप वो साइड देखो अंशुल भाई, कमिंस जो विकेट हाईएस्ट विकेट टेकर था ऑस्ट्रेलिया है वैसे, हेजलवुड पिटा 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 फिर जाके विकेट्स मिल. सो आई मीन द विकेट इन जनरल इज नॉट हेल्पिंग द bowler. Yes, वुड को आप छोड़ दो, वुड तो मतलब Wood मेटल और का बना Wokes हुआ दोनों है. like जबरदस्त कर रहे बिकॉज हैं लोग. देयर पेस इज जबरदस्त एंड शॉर्ट बॉल अच्छा है उन लोगों का वेरिएशन, बट वुड अगेन 155 every time is not easy for anyone. So Yeah, अगर आप जिमी एंडरसन को लो और उसकी बॉलिंग देखो और कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क के फिगर्स देखो आप, तो आप समझ जाओगे कि जिमी अच्छा ही कर रहा है. इट्स द विकेट मैन, इट्स वेरी फ्लैट एंड आई डोंट नो, मैं वही शॉकिंग हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया कैसा बैटिंग नहीं कर पा रही. इतनी अच्छी ऑस्ट्रेलिया की 8 डाउन तक बैटिंग है, 113 for 4 है. एंड यस, आप बोल सकते वुड, बट लाइक at the end of the day, these are quality batsmen and you have to call them out. Like Usman Khwaja, David Warner, Steve Smith से तो मेरे को उम्मीद थी like he might just stick there because he loves वो तो batting. बच गया वो कैच भी. Yeah. I mean, Root's reaction kind of gave it away, but I thought it was out, man. Like, still, I feel that catch was out, but his reaction showed maybe it hit the grass. But बच गया था स्मिथ उन्हें. लेकिन that setup, man, Wokes to Warner. Warner, one that he should have left. He played at it, play and miss. The second one, he got closer to the stumps, Wokes, and he should have played that and he tried to leave it. And he got inside edge onto the stumps and he got out. So that is high class bowling, proper planning, accuracy was impeccable from Wokes, and they're inducing mistakes from Australia. They're being relentless. I think different bowlers have different plans. They have different lines and lengths they're hitting, and they're causing problems. I think Australia, the first innings in particular, they screwed up. I completely agree with that because they all got starts and didn't make the most of it. Whereas England made the most of it. From Zach Crawley to Johnny Bairstow, everyone like scored runs. Moeen Ali, and bro, like easily Joe Root, Stokes, and Brooke could have got hundreds too, but they were just like pelting it all over the ground, and they got out. So उन लोग भी मार देते थे century. So England were like brilliant, but that's the thing. You need at least 2 players to get to 100 or close to 100 on a pitch like this, and Australia didn't do that in the first innings. Yeah. Now coming to the most like boring test match probably in this kind of scenario from where you're watching the Ashes and now 76th century.
76th century for the king. I mean, long live the king. Bolte, of course. I don't know if he's going to get to 100. There's age on his side a bit. I would say he could do it, but he has to maybe work harder in the T20 circuit, maybe, which it doesn't look like. So maybe more in the ODI circuit as well. But coming to the fact that it's 417 for 8, Ishan Kishan not making the most of his debut innings. I thought he would have been able to do something, but he didn't. Apart from that, Ravindra did a good partnership with Virat Kohli. साथ दे दिए भाईजान के एंड विराट कोहली 121 पे आउट हो गया. I thought he'd get a double 100, man, to be fair, but Ashwin is enjoying his batting, whatever he's getting, and I told you, रनआउट man, अच्छा था वो कोहली का. 500 बनाने वाले यार और फिर खत्म. They're just going to जडेजा and Ashwin घस जाने वाले खाली. Abhi, they're 426 for 9. I think Ashwin is batting. But yeah, I think that run out of Kohli was good. But Kohli and Jadeja both batted really well. They were taking a few risky singles here and there. But double since 2012, baby. That's what he said to the keeper. He said, take stealing double since 2012. Yeah, and पर आउट भी हो गया उन्हें वैसे मगर जो बैटिंग उन्हें करा Double तो आज नहीं हुआ. yesterday there was a period where India were under pressure, 180 for 4. West Indies were taking wickets. They took their time, they assessed the conditions, and today they attacked. They got the boundaries when required. Proper test innings from Virat Kohli. Yeah, it's not as fun as the Ashes, but 100 is 100, and really good batting from Jadeja too. Ishan Kishan getting a bit of a start, but then getting out. Shubman Gill also not making the most of it, but I think overall India will be happy with the score. I think now, like you said, Ashwin Jadeja, they're saying, the commentators are saying it's still a good wicket to bat on today and tomorrow. So let's see what happens, what West Indies do. But I feel that India are in a very, very strong position to win this game. 100%. I think वही है कि now they got a big score and they just gonna capitalize. Ashwin Jadeja घुस जाने वाले हैं भाई. उन लोगों का जो ball skid होने वाला है coming in, they won't be able to assess it, and like again inexperienced West Indies side है. देखेंगे. I mean, hopefully if the West Indies put up a fight, it'll be fun to watch. India at least getting a little bit of competition, but at this point of time, it looks bleak. Anshu bhai says सारे player को तेज नहीं खेलना चाहिए. रूट और स्टोक्स अपना नेचुरल गेम, कहीं बाकी सब तेज खेलें. Yeah, I mean Stokes I think naturally भी तेज ही खेलता. Yeah, he does have a tendency to soak in pressure. जब रहेगा तो वो soak in कर सकता है. वो तो आप हर वर्ल्ड कप का वो उठा के देख लो, T20 का वर्ल्ड कप का देख लो, and like again and 2019 leads and then the test before this like what 155 तुम्हारा. मैं agree करता हूँ इसके साथ, लेकिन ये है कि जो अच्छी बैटिंग विकेट थी और जो रूट अप्रोच करा कल, जो एग्रेसिव हो गया था, इट डिडंट गिव ऑस्ट्रेलिया ब्रीदिंग स्पेस. समझ रहे हैं आप? लाइक नॉर्मली अगर रूट थोड़ा सा टाइम लिया था वो पिच पे, इट वुड हैव केप्ट ऑस्ट्रेलिया इन द गेम. दे कुड हैव टॉयड विद द फील्ड अ बिट एंड एवरीथिंग, बट बिकॉज़ ही केम एंड स्टार्टेड हिटिंग एंड जैक क्रॉली वहां से फोड़ के रख दे रहा है, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था फील्ड कहां सेट करूं, किसको कौन सा बॉलर को लेके आऊं, किधर क्या करूं. इट वाज हाई रिस्क फ्रॉम इंग्लैंड बट इट पेड ऑफ. तो सर्टेन सिचुएशंस लाइक सोप टेस्ट के लिए तो चल जाता है, राइट? इट पुल्ड ऑफ. सरप्राइज हो गया. Surprise हो गया. They pulled something out of, and I think अगर जो Root immediately out होता, then probably Ben Stokes would have played much more slower. But I think Root जिस तरीके से carefree खेले and he managed to get 84. I think that in itself was good. So मोइन अली भी आके अच्छा तेज मारा. So I think वही था कि अरे अगर एक आध दो को लेंगे तो थोड़ा मारने की वो कम हो जाएगी. But the run rate was 7 at one point of time, and I think that speaks itself. And Brook and Stokes जब पार्टनरशिप कर रहे थे सेफ ही खेल रहे थे, इतना वेवर्ड नहीं खेल रहे थे. स्टोक्स वाज इरिटेटेड एक्चुअली जब वो आउट हो गया था. उसको थोड़ा गुस्सा भी आ गया कि वो विकेट फेंके वैसा हो गया था. बट आई थिंक जॉनी बेयरस्टो का जो 99 था, इट मेड अप फॉर एवरीथिंग. एंड अब आप देख लो लाइक ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से खेल रही, इवन इफ यूर आप धीरे भी खेल रहे, इट्स नॉट रियली हेल्पिंग योर कॉज. सो आई थिंक गेट रन्स. एंड या आई एग्री विद अंशुल भाई कि एक एंकर तो रहना चाहिए. अब वो रूट रहे या स्टोक्स है, वो उन लोग की मर्जी है. बट अगर everybody goes to hit, then there might be a little bit of a problem. One of cases में आज ये जो इनिंग्स थी इंग्लैंड की, आपको वैसा मिल गया कि क्रॉली भी मार लिया, मोइन भी मार लिया, रूट भी मार लिया, स्टोक्स भी मार लिया, and everybody hit. But it won't always happen. Like that's what it is. Yeah, first I have to take a leave, but before that, I'll. What I want to say is that baseball is alive. This Test match series is alive. Hopefully, Parish
नहीं, अगर बारिश नहीं तो अगर उन लोग को एटलीस्ट 50 ओवर मिल गए 2 दिन में, इंग्लैंड कैन रैप दिस अप, राइट? So it's Yeah. about getting the wickets done. They might even get them all out, and like you said, maximum maybe 50 runs chase करना है. So we're just hoping the weather stays good, and we wanted 2-2 going to Oval. But yeah, incredible batting from England. This is something that we haven't seen in the past. This is like, the like changing history or changing cricket, man, right now. And we are Yeah. very lucky to witness batting like this. So if you haven't seen the match, go and see the highlights. बहुत मजा आया देखने में. एंड क्या जो भी आपके कमेंट्स है और क्वेश्चंस पूछते रहिए. फैज विल टेक इट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड वी विल कैच यू टुमारो होपफुली. फैज, थैंक यू सो मच. एंड See you later. See you later. Yeah. Take सी यू care. लेटर अलैगे. एलिगेटर. बट या आई मीन जिस हिसाब से मुस्ताफा बोल रहे थे कि गोइंग इनटू द सीरीज, अगर सीरीज के लिए फॉर द सेक ऑफ अ गुड सीरीज टू एंड 2-2 अब ओल्ड ट्रैफर्ड पे जो जीते, अपने को तो फर्क पड़ता नहीं टेक्निकली, बट इट वुड बी फन टू सी अ गुड शोडाउन एट द ओवल. अगर 2-2 पे है, अगर 2-1 हो गया तो देन इट विल बी अ लिटिल बिट अपसेटिंग. एंड बारिश अगर हो गई, बारिश के आसार हैं, कल फुल फ्लेज सैटरडे का है फोरकास्ट के, पूरा दिन बारिश हो सकती है. सो होपफुली दैट डजंट हैपन, बिकॉज़ जितनी मेहनत इंग्लैंड करके यहाँ तक लाए हैं उससे पानी फैल जाएगा. एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वुड बी एक्चुअली विशिंग फॉर रेन, क्योंकि अगर बारिश हुई तो अगेन ऑस्ट्रेलिया वोंट हैव टू कम आउट टू बैट, एंड it'll lead to something good for the Australian side, at least a sort of a sunshine in a rain. But मेरे हिसाब से इंग्लैंड आउटप्ले कर दिए, ऑस्ट्रेलिया थकी हुई दिख रही है, ऑस्ट्रेलिया हारी हुई दिखी, बिकॉज जो कॉन्फिडेंस एक 2-1 की साइड को होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया डिडंट ब्रिंग दैट फॉर मी. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया कुड हैव बीन मोर एग्रेसिव. ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखो लास्ट टेस्ट भी जीत सकती थी, लेकिन दे मेस्ड अप ऑन देयर ओन सेल्फ, एंड दे हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम फॉर इंग्लैंड्स कमबैक. एंड आई थिंक जिस तरीके से इंग्लैंड मेंटालिटी वाइल जो तरीके से ये सीरीज में आई है, ये फोर्थ टेस्ट में जो ओल्ड ट्रैफर्ड पे आई है, कमेंडेबल है. बिकॉज ऑस्ट्रेलिया लुक्ड वेल इन फॉर्म, वेल इन पावर. 9 डेज का ब्रेक था, सो यू रियली थिंक कि हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया मच बेटर फॉर्म में आएगी. अब सवाल ये उठता है कि भाई टॉड मर्फी को लेना सही था, गलत था? अभी तक तो ऐसा कुछ दिख रहा नहीं, बिकॉज विकेट फ्लैट है. मे बी टॉड मर्फी वुड हैव क्रिएट समथिंग डिफरेंट, बट दे डिड ट्राई ट्रेविस हेड, दे डिड ट्राई लाबुशेन also, towards the bowling end, and it didn't really make a difference. So मेरे हिसाब से तो इंग्लैंड शुड विन दिस वेरी इजीली. अगर बारिश नहीं हुई, तब 2 दिन अगर लगातार बारिश हुई, दैट विल बी सैड फॉर द टूर्नामेंट. एंड देन गोइंग इनटू ओवल 2-1, वहां पे मजा आएगा ऑब्वियसली, बिकॉज इंग्लैंड विल हैव टू फाइट फॉर अ ड्रॉ. बट आई थिंक इंग्लैंड टोटली डिजर्व दिस विक्ट्री, एंड इट्स 2-2 होपफुली, एंड देन वी गो इनटू द फाइनल गेम. T20 में डेविड मलान की इनिंग्स को लेके चलता है, बाकी सब मारते हैं, तो टेस्ट में क्यों नहीं? अब इन लोगों का जिस तरीके का सेटअप है अंशुल भाई, इन लोगों का नो फियरलेस क्रिकेट है. फियर ऑफ लॉस में उनको डर नहीं लगता. उनको लगता है कि भाई अगर हम लोग ये प्रोसेस स्टार्ट करें जहाँ पे हम मारते रहेंगे मारते रहेंगे मारते रहेंगे, ऑब्वियसली 100 टाइम्स में से 60-40-50 टाइम नहीं होगा, बट 50 टाइम्स होगा. तो 50-50 नॉट अ बैड परसेंटेज. इन जो आप तरीके से देखो, लाइक एनीवन अगर नॉर्मल क्रिकेटर है तो दे थिंक कन्वेंशनल स्टाइल खेल लेंगे कोई भी, लेकिन इंग्लैंड इज टेकिंग एवरीबॉडी बाय सरप्राइज विद दिस प्रोसेस दैट दे हैव. मेरे को भी थोड़ा बहुत प्रूव रॉन्ग हो चुका है. आप देख लो, दे प्लेड द सेम थिंग. पाकिस्तान में एक दिन में 500 रन मारे, न्यूजीलैंड में मारे, देन यहाँ पे भी मार रहे. सो दे कंसिस्टेंटली अचीविंग रिजल्ट्स. ऑब्वियसली हमेशा इट विल नॉट पे ऑफ, हमेशा इट विल नॉट पे ऑफ. एंड इन लोगों की जो बैटिंग की मेंटालिटी आप देख लो, क्रॉली मारने वाला है रूट बोरो में, बेयरस्टो मारने वाले हैं, स्टोक्स मारने, एंड ऑल क्लीन हिटर. ऐसा नहीं है कि कोई तुक्के में मार रहा है या कोई एजेस मार रहे हैं स्टफ. इट्स व्हाट दे डिसाइडेड टू डू. डेविड मलान का जो है, आप बोल रहे हो कि लेके चलता है, इट्स बिकॉज दे डू ऑल्सो. T20 में देखिए ओवर्स कम होते हैं, एंड यू हैव टू सॉर्ट ऑफ create a biggest total that you have. So everybody else has an attempt, and David Milan is probably the anchor in that sort of a scenario, because you do need an anchor. And David Milan का power hitting भी है, he can come and change the context. So sometimes आप देखो David Milan भी अपना approach change करके मारने भी जा सकते हैं. So that is what Joe Root is sort of becoming in this test format. Joe Root का भी आप जो बोल रहे थे कि slow खेलते खेलते तेज खेल रहा है. So I think it's just they're trying to mix things up, and not trying to be easily understandable to the opposition. तो opposition को हमेशा सरप्राइज में रखना चाह रहे कि भाई ये गेम प्लान समझो, हम लोग ये गेम प्लान करेंगे. वो एक टैक्टिक हो सकती है, और दूसरी टैक्टिक ये हो सकती है कि भाई एक एंकर तो रहना चाहिए, बट टेस्ट में तो वो नहीं दिख रहा, बिकॉज विकेट जेन्युइनली बहुत अच्छी थी ये वाली. आप फर्स्ट टेस्ट देखो, जो रूट 118 जो मारा, इट वाज अ गुड इनिंग्स, इट वाज अ जो रूटिश काइंड ऑफ इनिंग्स. बट उसके बाद से he has been a little bit fast, but it's not really messed things up for England. इंग्लैंड जितना बेसबॉल खेल रही है या तेज खेल रही है, उन लोग के फेवर में चला है. एटलीस्ट ये टेस्ट मैच में तो आप देख लो, लाइक स्टोक्स देख लो, मोइन अली तेज खेला, क्रॉली तेज खेला,
इट्स वर्किंग फॉर देम, सो व्हाटएवर वर्किंग फॉर देम, आई थिंक विनिंग चीज को ज्यादा थिंग। एंड कहाँ से वो लोग शुरू करे और कहाँ है अभी इंग्लैंड, आप भी मानोगे या नहीं मानोगे, आई डोंट नो, बट दे आर अ फोर्स टू रेकन विद। इट्स अ वेरी नो dangerous side right now, and I think completely I agree with Brendan McCullum and Stokes right now. I mean 100% मैं फैन नहीं हूँ बेसबॉल का, कन्वेंशनल क्रिकेट थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच होना चाहिए, जो आप देखो हैरी ब्रुक ट्राई करा, बेन स्टोक्स ट्राई करे, so they are trying to get things, they're trying to get a perfect balance. Obviously overnight nahi hoga ye cheez, it will substantially come in as the game progresses, but ऑस्ट्रेलिया के लिए वही बोलूंगा कि दे नीड सम काइंड ऑफ अ चेंज इन देयर साइड। आई नो 5 पेसमैन डिड नॉट वर्क, फ्लैट विकेट था, ज्यादा कुछ मिला नहीं। बॉलिंग भाई हेजलवुड बेचारा बहुत मेहनत करके 5 विकेट्स निकाला, कमेंडेबल था उसका जो भी स्पेल था, बट इंग्लैंड रियली गेव इट टू देम। ऑस्ट्रेलिया से बैटिंग वाइज अगर आप देखो उम्मीद ज्यादा है। उस्मान ख्वाजा जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, 100 मार चुके हैं ये टूर्नामेंट में, एंड ही गॉट 60 50s। आई वाज एक्सपेक्टिंग स्मिथ से बहुत उम्मीद थी ये पिच पे कि डबल 100 मार सकता था। एंड जेन्युइनली ये इनिंग्स में मैंने मुस्तफा भाई को मैसेज भी करा था कि भाई बैटिंग सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नीड टू बैट, खाली ये सोचो कि ये नेट सेशन है, ये प्रैक्टिस सेशन है। बट ऑब्वियसली मार्क वुड मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस इन टू दैट बॉलिंग अटैक। 150 जो 90 माइल्स पर आवर कंसिस्टेंटली डाल सकता है, डरावनी है, बट यू कैन आउट प्ले। ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन नहीं खेल के 150 140, जस्ट प्ले हिज ओवर आउट, जस्ट प्ले हिज ओवर आउट, मेक अ टैक्टिक, प्ले हिज ओवर आउट, एंड यू जस्ट अटैक द अदर बॉलर्स लाइक वोक्स, एंडरसन, ब्रॉड, इन लोगों को अटैक करो, आप मत जाओ, डोंट गो आफ्टर डेविड वुड। सो आई थिंक दैट यू जस्ट नीड टू स्टे एंड स्टे ऑन द क्रीज, एंड दैट्स व्हाई लैबुशेन इज देयर राइट नाउ। अब लैबुशेन का तो मालूम है कि एक आध चांस देता है, वो एक आध चांस अगर इंग्लैंड लेती नहीं लेती है, बट अगेन फार फेच्ड है, बिकॉज ग्रीन, मार्श, एलेक्स कैरी, स्टार्क, दे स्टिल नीड टू स्टैंड। लाबुशन जितना भी खर्च जाए, आप जो नॉन स्ट्राइकर है वो भी रहना चाहिए। सो आई थिंक वो एक इंटरेस्टिंग चीज होगी देखने के लिए कि क्या होता है कल। बट अगेन बारिश के आसार है, होपफुली दैट डजंट स्पॉइल द मोमेंटम ऑफ द गेम एंड वी हैव अ फिनिश एट द एंड ऑफ द डे। जोफ्रा और ऑली स्टोन, मजा आता वुड के साथ, बिल्कुल मजा आता, बट जोफ्रा आर्चर जिस तरीके के फॉर्म में है अभी, मजा नहीं आता। बिकॉज मुंबई आई नो T20 फॉर्मेट है, इंडिया है, बट इंडियन के जैसी पिच है ये वाली जो ओल्ड ट्रैफर्ड की है। एंड जोफ्रा आर्चर इंजरी से वापस आ रहा है, तो उसका परफेक्शन नहीं मिलेगा अपने को, जो उसको आई मीन ही इज इनक्रेडिबल इन टेस्ट क्रिकेट, जबरदस्त है, इंग्लिश कंडीशन में जबरदस्त है, बट पिटने की भी क्षमता है उसमें। बट अगेन इंजरी, वो जो हार्ट कटा था उसका फिशिंग इंसिडेंट से, एंड आई थिंक इट वुड टेक हिम। ऑली स्टोन, या इट वुड हैव बीन फन टू सी ऑली स्टोन गेट इन, बट क्रिस वोक्स में भी साथ मजा आ रहा है। एंड ऑब्वियसली आप जिमी एंडरसन एंड ब्रॉड को भी देखो, ब्रॉड का तो रहना वाजिब होता है, बिकॉज ब्रॉड हैज बोल्ड प्रीटी गुड थ्रू आउट दिस एशेज सीरीज। जिमी में भी विकेट टेकिंग नहीं है, बट इकोनॉमिकल है। जॉश टंग को देख के भी सेकंड टेस्ट में मजा आ रहा था। आई थिंक इट वाज गुड व्हेन उन्हें जो बॉल अंदर ला रहा था, इट वाज गुड टू सी दैट एज वेल। बट यस, ऑली स्टोन आल्सो वुड हैव बीन फन टू वॉच। जोफ्रा नॉट दैट मच, बिकॉज जब 100% जोफ्रा के उस पे आ जाएगा, जब मजा आएगा देखने के। सेम थिंग विद क्रिस जॉर्डन, आई थिंक क्रिस जॉर्डन तेज है, बट अगेन इज नॉट कंसिस्टेंट, तो नहीं बनता उसका। बट इंडिया के हिसाब से विराट कोहली 76th सेंचुरी ओवरऑल इन ऑल द फॉर्मेट, 76, 100 मारेगा नहीं मारेगा वो तो टाइम ही बताएगा, बट at least he's got his I think second 100 in this year or something in terms of international cricket। एक मारा था श्रीलंका के अगेंस्ट, अभी एक मारा, and I think कहीं और एक मारा होगा, if I'm forgetting, forgive me, but that's what I remember। at this point of time इंडिया का स्कोर है 440 for 9, and yeah I think अश्विन की भी अश्विन भाई मारते जा रहे हैं। I think अभी अश्विन आउट हो चुके हैं। Yeah, I think that wraps it up. So 438 India are all out। इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग कि वेस्ट इंडीज कुछ काउंटर अटैक कर पाती है नहीं कर पाती है। अश्विन और जडेजा अगर क्लियर अप कर दिया तो आई एम प्रीटी श्योर फॉलो ऑन देके फिर निकाल लेंगे, इज व्हाट आई फील, कि इट्स टू इजी फॉर इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड दे आर जस्ट बुलिंग वेस्ट इंडीज। बट यू नेवर नो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है भाई ये तो। एनीथिंग टेस्ट का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाएगा विराट सचिन का, हाँ टेस्ट का रिकॉर्ड शायद ना तोड़ पाए, बट ओवरऑल बोल रहा हूँ मैं 100 कर पाएगा कि नहीं वो भी जरा मुश्किल है, गिवन द फैक्ट इज 34 राइट नाउ और 35। वर्ल्ड कप खेल लेगा, आई डोंट नो अगर वो रिकॉर्ड के लिए जाएगा या नहीं जाएगा, वो भी एक चीज है। एंड अगर इंजरीज होते हैं, होपफुली नहीं होना, बट लाइक ही इज वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर स्टिल, ही कैन स्टिल बैट इन देयर 3 years, बट 3 years में कितनी ही सेंचुरी मार पाएंगे वो देखना पड़ेगा। सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। सचिन तेंदुलकर ने शेयर भी करा आज विराट कोहली की सेंचुरी के, अनदर सेंचुरी बाय विराट कोहली, तो अच्छा है, द रिस्पेक्ट इज देयर। इट्स गुड टू सी विराट कोहली बीइंग अप्रिशिएटेड बाय द लिटिल मास्टर। एंड
इंडिया ए पाकिस्तान है जो एशिया कप का इमर्जिंग है, एसीसी इमर्जिंग टूर्नामेंट चल रहा है, उसका फाइनल संडे को होगा, इंडिया ए वर्सेस पाकिस्तान ए। पाकिस्तान ए ने श्रीलंका ए को हरा दिया और बांग्लादेश को इंडिया बांग्लादेश को हरा दी थी। वेरी गुड spell from the Indian bowlers Nishant Sindhu, 5 wickets, 20 runs in 8 overs, and Manav Sotore took 3 overs in 8 over, three wickets in 8 overs. So जबरदस्त था। 211 इंडिया मारी थी। एंड हाँ, अंशुल भाई वही बोल रहा था कि बांग्लादेश सॉलिड दिख रही थी भाई, 74 नो लॉस, एंड देन निशांत आके विकेट्स निकालते गया एंड कहीं ना कहीं कोलैप्स हो गई बांग्लादेश। बट आई थॉट बांग्लादेश वुड हैव गिव देम अ टफ टाइम। 70 का रन स्टैंड था एंड नॉट अ लॉट ऑफ रन ऑन द बोर्ड। बट अच्छा हुआ, अभिषेक शर्मा भी एक विकेट ले लिया। आई थिंक इट वाज गुड टू सी दैट इंडिया हैड अ फाइट। अब संडे के ऊपर देखना है क्या होने वाला है। आप हमारे साथ जुड़िए, कल हम फिर आएंगे लाइव पोस्ट द डे 4। मे बी वी गेट अ रिजल्ट आउट ऑफ इट, द एशेज, एंड इंडिया का भी मालूम होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बट टिल देन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चेजिंग द टारगेट, हमारे रील्स देखिए, शॉर्ट्स देखिए, होपफुली ज़्यादा आएंगे। सो टेक केयर एवरीबॉडी एंड हैव अ नाइस